3 इंपॉर्टेंट चीजें एज अ होस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुझे पता हो या एटलीस्ट मुझे आइडिया हो ताकि मैं उनसे दोस्ती कर लूं और एल्गोरिथम को एआई को समझ लूं। आप क्या बताएंगे 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे समझ? पहला तो यही है कि योर विजिबिलिटी, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या सोशल मीडिया हो, वो होना बहुत जरूरी है। जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं कि कुछ समय गुजारो इन द सेंस डू अ कॉर्पोरेट जॉब, वर्क इन द इंडस्ट्री, जरूरी है? It is not necessary. See, for everyone, it's their oन journey that they're undertaking. When as a young person you're starting a business. मनीष सर मेरे टीचर रहे हैं तो हम लोग लद्दाख में मिले फेलोशिप के दौरान और बहुत कुछ हमने सीखा। तो सर वो जो बैक ऑफिस में आप काम करते हो, जो अदर साइड ऑफ द इंडस्ट्री है, हमने इंडस्ट्री देखी है ट्रैवल की एज होस्ट पर्सपेक्टिव, एज गेस्ट पर्सपेक्टिव या मार्केटिंग और सेल्स की। एक पीछे अलग इंडस्ट्री चल रही है सर। क्या है वो इंडस्ट्री? कि लोग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी तो बना देते हैं लेकिन लिस्टिंग जो कि उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद प्रोस्पेक्टिव गेस्ट, उसमें वो नहीं कर पाते ठीक। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर, बिकॉज नाउडेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्टेक, काफी पैसे भी देने पड़ते हैं सर। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में सर पर से स्टेज, होटल्स, होम स्टेज, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? एक प्राइस आता है जो एक्चुअली गेस्ट पे करता है, इसमें एक गैप होता है सर। वो गैप आइडेंटिफाई कैसे करें? यहाँ पे प्रॉब्ली हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से बहुत कम लोग होते हैं। एक इंडस्ट्री का मिसमैच, क्योंकि कईयों की प्रॉपर्टी, शानदार प्रॉपर्टी पड़ी हुई है नैनीताल में, रहते वो शायद कनाडा है। कितना फीजिबल है ये रेंटल आर्बिट्राज मॉडल? We don't talk from studios, we talk on the ground, where travel meets conflict, where views meet reality, and where reels meet red. Because to understand the future of travel, you must first understand the truth of travel. Most people see travel as vacations, hotels, homestays rooms, and Instagram reels. But travel is way beyond that. The guest today has seen the other side of the industry, the side where algorithm decides the booking, where cities rise and fall in tourism, where pricing is psychological and demand is created before you even search for it. Our guest today isn't just from the travel industry. He has been at the engine room of it. He has worked with India's biggest travel tech companies like GoIbibo, Make My Trip, led revenues for hotel businesses, operated large hospitality brands, and finally built his own luxury hostel brand in Rishikesh by the name of Swenson. He's worked directly with government teams, corporate leadership, hotel owners, on-ground hosts in Ladakh and various other places all around India. Please welcome a man who understands guests, hosts, market, data and demand. So welcome Manish, welcome to our podcast. Thank you. Good to be here. Actually good to be here because we are at your place. तो एक्चुअली हम वही करते ही हैं, जिसका ग्राउंड है वहां पे जाते हैं। अच्छा। तो रियल फीलिंग भी आती है और कुछ अच्छे मोमेंट्स भी कैप्चर हो जाते हैं। तो सर यू वर्कड विद हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट्स, यू वर्कड इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख एंड हिमालयस। क्या है आपकी कहानी सर? कहानी तो ऐसी रही है कि rather than living a very structured life as per the social conventions, I have done what I've always felt like doing. So I started with corporate and I enjoyed a lot. Like worked a lot in Dulux Paints, GoIbibo. Right. Grew the businesses fast, profitably. But after a point I was like, this is not what I want to do. Right. For the long term. And उस समय Ladakh came as an opportunity. Right. So I went and joined Hayal. Right. Working with Mr. Sonam Wangchuk. Right. And उसके बाद when that journey got over after 1.5 years, then I moved to Rishikesh. I wanted to continue working in hospitality. So then I set up my own property in Rishikesh. Then I grew the brand to 4 properties. Right. And uske baad then coffee happened. Coffee was always there in the background, but eventually I realized that I want to professionally be in coffee also.
So then coffee happened. Coffee is now growing very fast. So the hospitality side of business, now I have restricted it to just one property where we are sitting right now. Right. And rest of the time I spend with coffee. A beautiful journey. I think a lot of people want to take that journey. वो starting from I think engineering किया आपने. Ah, सर ये क्या है इंजीनियर्स के साथ प्रॉब्लम? इंजीनियरिंग करते हैं फिर आपने MBA भी किया. yes. ये क्या है सर? Why is it so? So engineering, what that helps you with is that helps you with a very logical and tactical mind. Right. Okay. इंजीनियरिंग में करियर नहीं बनाना वो तो फर्स्ट ईयर में समझ आ गया था. अच्छा. Okay. But I did not have the guts to drop out. Right. So I completed that. Right. MBA I think has been very, very helpful. See, what you see around in most of the people is that after MBA, most of the people are working like in corporate, which is completely okay. But in a B school, you are actually taught how to run a business. Okay. So why not run your own business? Great. Okay. So there's one way of going about it is that you are handling and managing someone else's business, and that is where your degree is coming in use. Right. The other is that you're creating your own business. So you also come from a decent college, from a decent big school. Yeah, I am Mumbai. I am Mumbai. Yeah. Great. So this was earlier called NITI Mumbai Right, when I was right. there, and 3 years ago it was renamed as I am Mumbai. Oh, perfect. So सर ये जो आपको ख्याल आया कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कि यार इंजीनियरिंग नहीं करनी है बट कर ली, ये ख्याल कब आया कि अब यार अपना बिजनेस करना है? ये तो I think even when I was in corporate it was always there. Two things were there. एक तो the love for mountains, Right. and the other that I want to do something of my own. So when I was in corporate, even then I was running a trekking company as a Okay. side hustle Okay. from 2014 to 16. Okay. So it was always there that I want to do something of my own. Practically because I always felt that I can bring in a fresh thought perspective in how businesses are supposed to be run. Okay. In terms of making them more sustainable, making them better for the society. Because when you are running business, it cannot be only for profits. Right. There has to be a greater good that you are aspiring to create. And वो clarity होनी I think बहुत important है for every entrepreneur. पैसा तो बन जाता है, पैसे बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं. You don't need to do your own business also for that. Okay. But when you start thinking of doing something, कि इसका क्या फ़ायदा होगा आसपास, how will your ecosystem get impacted, how will the ecology get impacted, how will the society get impacted, वो सब सोचना बहुत ज़रूरी है. Unfortunately, that's not how the world works for most of the people. Right. But for me, that was very important. Great. Anything and everything that I'm doing, what is the social good that you can create out of it? It can be very big, it can be very small, but at least it should not be a social bad that you're creating. Okay. At least be neutral. Yeah. That's what you're saying. कोई पॉजिटिव हो बहुत अच्छा है, बट न्यूट्रल तो रहना ही रहना. Minimum. That is the minimum. But that only happens when you start thinking of the impact. अगर आप impact के बारे में सोच ही नहीं रहे होगे, तो by default businesses do not create a great impact, at least in today's world. Right. कलयुग में जी रहे हैं. ये बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हो सर कि इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग आना भी एक मैच्योरिटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग टू द इकोसिस्टम अराउंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मुझे कुछ समय बिताना पड़ता है. राइट. So you need that experience. राइट. हाँ. सो तब आप एडवाइस करते हो जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं कि कुछ समय गुजारो, इन द सेंस डू अ कॉर्पोरेट जॉब, वर्क इन द इंडस्ट्री, जरूरी है It is या not किस तरह से? necessary. See, for everyone, it's their own journey that they're undertaking. When as a young person you're starting a business, the probability of making mistakes is slightly more, but you learn from those mistakes. Right. So you can either learn from experience in a corporate or you can learn from your own mistakes. Okay. Right? Which is better? Again, there is no good or bad. Okay. Right? दोनों it depends on कि वो आपके अंदर वो ट्रिगर कब आता है कि मुझे अपना काम करना है. अच्छा. See, you have had people who have started businesses in their 50s and 60s and have went on to become great brands, like KFC also, I think. Correct. The guy started in his 60s, right? तो कोई एग्जैक्ट सही टाइम नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने का, वो अंदर से आता है. और आपने तो 2-3 बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, रन किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं.
सो कमिंग टू योर फर्स्ट बिजनेस, आपने बोला ट्रैकिंग इंडस्ट्री में आप आए थे, समवेयर टूरिज्म में आए, ट्रैवल में आए, उसके बाद आप ऋषिकेश आए. ऑफ कोर्स थोड़ी सी कहानी बैकग्राउंड बता दूं, मनीष सर मेरे टीचर रहे हैं तो हम लोग लद्दाख में मिले फेलोशिप के दौरान और बहुत कुछ हमने सीखा ड्यूरिंग आवर फेलोशिप फ्रॉम मनीष. सो मनीष, थैंक यू फॉर दैट. And we it's also a pleasure to have the whole group together. actually, and this group today is together. We are a lot of people here. तो वहाँ सर हमने जाना था, समझा था कि आपने before you came to Ladakh, you worked with tech travel companies. We can call it that way because Ibibo, Make My Trip, और वो भी बहुत closely with the senior level, you know. तो सर वो जो बैक ऑफिस में आप काम करते हो, जो अदर साइड ऑफ द इंडस्ट्री है, हमने इंडस्ट्री देखी है ट्रैवल की एज होस्ट पर्सपेक्टिव, एज गेस्ट पर्सपेक्टिव या मार्केटिंग और सेल्स की, एक पीछे अलग इंडस्ट्री चल रही है सर. क्या है वो इंडस्ट्री? See, when you look at the travel tech, okay, the problem you're trying to solve is कि earlier, just go back 20 years back, अगर आपको कोई होटल बुक करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, या तो ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे, राइट, या फिर आप ट्रैवल करोगे, वहाँ उतरोगे और होटल ढूंढोगे. करेक्ट, राइट, करेक्ट. एंड बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि अनरिस्ट्रेन्ड सी इंडस्ट्री थी, स्टैंडर्डाइजेशंस नहीं थे, यू डोंट नो व्हाट यू विल गेट. या शायद वही स्टैंडर्ड्स थे, वही स्टैंडर्ड थे उस समय. राइट. तो ट्रैवल टेक का जो कोर था शुरू से ही रहा है, वो यही रहा है टू क्रिएट दैट विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ओके फॉर द कंज्यूमर्स. ओके, कि होस्ट क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको दिख रहा है, आपको पता चल रहा है. व्हाट दैट हैज हेल्प्ड इज दैट इट हैज मेड ट्रैवलिंग इजियर. एक्चुअली राइट, 20 साल पहले आप नहीं ट्रैवल करते थे बिकॉज करना मुश्किल था. अभी आपको ऐप खोलनी है, बुकिंग करनी है, you're done. Correct. Whether it's a flight or a hotel or taxi, anything. Right. वो चीज़ बहुत आसान हो गई है, which has led to this increase in travel. Okay. ये जो ट्रिगर है ना, Right, ये right. होता बहुत मुश्किल से होता, अगर होता भी, अच्छा, अगर टेक नहीं होता तो. Okay, very interesting. Just imagine Right. कि you have these many number of hotels which are there today. Right. 20 साल से तो multiple X हो चुके हैं. Multiple. Right. बट बुकिंग अभी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू हो रही है. एंड विद ट्रैवल एजेंट्स देयर इज ऑलवेज दैट, बिकॉज सी दे आर सिटिंग इन अ सिटी एक्स एंड दे आर टेकिंग बुकिंग्स फॉर द होल कंट्री. ओके, इवन दे डोंट नो अबाउट ऑल द होटल्स. It is not that they will give you a wrong idea, right, but they themselves will not have the visibility. Okay. Because उन्होंने भी फोन पे ही बात करी होगी ना होटल वाले से. ठीक है, राइट, ठीक है. सो वो आपको क्या प्रॉमिस कर रहे हैं और वहाँ जाके आपको क्या मिल रहा है, उसके अंदर भी डिस्पैरिटीज रहती थी शुरू से. राइट. सो टेक हैज ट्राइड टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन द एंड कंज्यूमर्स एंड द होस्ट्स. वेरी इंटरेस्टिंग सर. मतलब आपका कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी अगर आई है तो वो ट्रैवल टूरिज्म में रेवेन्यू 10x हो गया या प्रॉब्ली मोर हो गया. एक बिजनेस बहुत बड़ा सेटअप हो गया है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस that the consumers now have, right, in what they will get. It's a very psychological game. Right. सर इसमें एक चीज मैं देख रहा हूँ, तो when you talk about travel agents, आज हम कहते हैं OTAs, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट. ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, तो ट्रैवल एजेंट्स तो आज भी हैं. हाँ. फिर आपने एक बात कही कि यू नो आज मुझे ट्रस्ट ज़्यादा हो रहा है बिकॉज मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मेरे को ऑफर क्या हो रहा है जो लिस्टिंग में. और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि एक ट्रैवल एजेंट एक पर्टिकुलर सिटी में है, कितना ही उसने ट्रैवल किया होगा, कितना ही उस जगह को समझा होगा. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स लाइक OTAs लाइक MMT, Ibibo, Airbnb फॉर दैट सेक, ये भी लिस्टिंग्स तो सर ऑनलाइन ले रहे हैं. सो एटलीस्ट फॉर Go Ibibo and Make My Trip, I can tell you, राइट, they have a field team which is, I think when I was there was more than 400 people. Okay. Okay. There's a person in every city, in every locality, Okay. who will come and visit your hotel, who will Right. check your hotel. Right. If there is a problem that a guest faces, Right. that person who is on ground Right. will come and help. Okay. Okay. Will help you get a new hotel if this hotel is not up to the standards. ये सारी चीजें एक ट्रैवल एजेंट नहीं कर सकता स्टैंड अलोन, बिकॉज अंडरस्टैंड, जो हमें पता है ट्रैवल एजेंट जो पहले के होते हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस. करेक्ट. राइट. दैट पर्सन विल हैव लिमिटेड कैपेबिलिटीज
to help. Bandwidth limited है. Bandwidth limited है और correct. वो हो सकता है वो भी आपके लिए एक alternate hotel arrange कर दे. बिल्कुल कर दे. But उसकी capability will be restricted by the fact that he is not in the city where you are traveling. Correct. Right. Correct. With online tech companies, see, they are handling 50,000, 60,000 hotels. So for them to keep a field team of 500 people is possible. It's possible. For one travel agent who is Feasible running है. his small business from a small room in Feasible some नहीं city, होता. कैसे करेगा? Possible ही नहीं Correct. है. Very true. Very true. And that is why what you see now is that a lot of these travel agents are now also using OTAs to do their bookings. Yes. So like GoIBO and Make My Trip have a platform which is Right. called My Partner, Right. through which they offer better rates to the travel agents. Okay. And they can be used. Okay. So a lot of small travel agents are also going to that network now. Okay. Because what that does is that gives them access to 60,000 hotels instead of Correct. a few hundred hotels that they were talking to earlier. बट सर यहाँ पे बड़ी अच्छी एक और बात मैं सोच रहा हूँ कि Airbnb as a platform, there is no local agents, Yeah. there is no network of local people, but then there are other people doing that job for them. So वहाँ पे how is Airbnb giving the same value, the same visibility to the homestay owners? Airbnb में अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो there is a two-sided loop. Okay. Okay, so in GoIBO Make My Trip there is one-side loop. So a customer can rate the host, give a rating, right? Correct. On Airbnb it is both sides. Okay, बिल्कुल. that creates a closed loop जिससे आपको पता है कि एक ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है. जी. Okay, so when you see that a person X has given a very bad rating to a Airbnb, तो आप पहले तो जाके उस Airbnb के सारे रिव्यूज चेक करोगे, फिर उस पर्सन X के भी करोगे कि ये कैसे देता है सबको, क्या ये सबको ही खराब देता है, सबको ही खराब देता है. तो देन तो इट इज नॉट Right, जस्टिफाइबल. right, ठीक है, बट अगर वो बाकी सबको अच्छा देता है इसको खराब दिया, विच मींस देयर सम रेड फ्लैग. Something like राइट. जी. तो वो जो क्लोज लूप है दैट हेल्प्स अ लॉट. Correct. ओके. सेकेंडली Airbnb is also for people who are looking to experience something new. See, you can always go and stay in a hotel which is like a branded hotel and you know कि एक standardized service मिल जाएगी. Right. Airbnb is used by people who want something else. Correct. कुछ अलग सा उनको एक्सपीरियंस करना है. तो उसके अंदर जो आपके ट्रेडिशनल पैरामीटर्स हैं रेटिंग से वो भी चेंज हो जाते हैं. Actually. कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो चेंज हो जाता है. Right. Very true, sir. Sir, यहाँ एक what I was thinking is we have met a lot of hosts during our journey Yeah. of the homestay academy. Yeah. We have seen कि लोग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी तो बना देते हैं, लेकिन लिस्टिंग जो कि उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Yeah. विद प्रोस्पेक्टिव गेस्ट, Yeah. उसमें वो नहीं कर पाते ठीक, और इस तरह से लीवरेज नहीं हो पाती है उनकी Airbnb. तो उसके लिए सर व्हाट डू यू एडवाइस, देखिए, और क्या ये- इतनी इम्पोर्टेंट है अच्छी लिस्टिंग? So while we live in an era जहाँ पे social media and online validation is very very important. See, we have to understand that for most of us it does not come naturally to us. कि हमें online होना है, राइट. वीडियोस बनाने हैं, कंटेंट डालना है, अपने बारे में बात करनी है. बिल्कुल. So for me also it's not something which comes very naturally to me. राइट. तो it is more about that understanding and acceptance कि ये करना ज़रूरी है. एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, करो ना करो वो अलग बात. पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है. वो एक्सेप्टेंस सामने होगी भी, वो अंदर से नहीं है. अंदर से नहीं है. ठीक है, वो अंदर से होनी बहुत जरूरी है कि यार इसके बिना नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. In today's world, this is how businesses are explored. This is how people explore products. वेरी इम्पोर्टेंट. Okay. या. वो नहीं होता. I understand that because I'm also not very good at it. Right. Like this place, when people come here, they're like, wow. But most of the people don't know about this place. Actually, they don't understand कि Rishikesh can have something so tranquil, so peaceful, because people have used to that idea of Rishikesh being Tapovan जहाँ पर बहुत भीड़ है. Right. तो राइट. even I'm not able to portray that out so well. Yeah. कि the Sweven Nirvan is a place like this and exists in Rishikesh. Sure. Okay. But हाँ, it is about acceptance. It is about understanding कि उसके बिना business नहीं चलता. ये आपने बड़ी अच्छी बात निकाली सर. ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज, अब पहाड़ के कोने में हो आप, मज़ा आ रहा है मुझे.
लेकिन यहाँ आने के लिए जो आपने बताया ना, पीपल आर एक्सप्लोरिंग बिजनेसेस ऑन स्क्रीन, ऑनलाइन. So acceptance to be online and then leverage your property. उसके लिए अच्छी listing होना I think बहुत required है सर. Because you have experienced this. I mean you just said आपकी Neer 1 property है, शानदार property है, अब बहुत tranquil है, मैं भी आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. But लोगों तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो, leverage नहीं कर पा रहे हो इसको. तो what do you advise people who are in the same pain? क्या करना चाहिए हमें? First, your listing has to be optimal. Okay. अब listings दो तरीके से होती है. If possible, you should have your own website. Secondly, all OTAs, and it should be like similar photos being used everywhere, so that when a person is checking out, उसको पता है कि हाँ ये same है जगह है जो मुझे बार बार दिख रहे हैं. It can't be कि एक जगह 10 अलग photos हैं, एक दूसरी जगह 10 अलग photos हैं. Then people will not be able to connect the dots. Very nice. That is important. Take help of the OTAs like Goa View and Make My Trip. The ground team will come and help you set up your profile. Right. And that is very important. Right. For Airbnb also there are consultants which can help you. Right. Make sure you get a great photo shoot done for your place. वो एक investment है, करनी पड़ती है. That is अपने part phone से of नहीं होगा. अपने phone से नहीं होगा. Okay. Color grading, lighting, you can't do it. Right. So that is one investment you have to make. Okay. And उसके बाद make sure that your social media is active, that you are posting every week. Okay. At least once a week, if possible 2 or 3 times a week. You're posting, you're telling about what is happening, what new is happening. Like abhi, I think a month back, we had these marigolds growing up. Correct. And the whole property became orange. You're right. Okay. Now, when you post about it, it's a nice thing. Correct. Right? Correct. Winters का onset हो गया है. This is now growing. The whole place is now orange. Right. And everywhere you see in front of your rooms, in the bonfire area, near the yoga hall, near the tents, everywhere you'll see this. Correct. तो इस तरह की चीज़ें. Then if you're hosting, ask people to give you video feedbacks and you post that. And generally people having lunch together on their bonfire. जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कीप पोस्टिंग अबाउट इट. इट डज नॉट नीड टू कम फ्रॉम कि पूरा एक कैलेंडर बनेगा, इस दिन ये पोस्ट होना है, इस दिन. कीप इट ऑर्गेनिक. Random. Keep it organic. Correct. Okay. But just keep posting. Right. And it should come from a place of honesty. It should come from a place of that whatever I am posting is something that I truly believe. You can't fake it forever. Right. You can fake it for 1 post or 5 posts, not more than that. So that brings me again to a very very important discussion which we keep having with our viewers. हम उनको clearly बोलते हैं कि photographs honest होनी चाहिए. तो आपने कहा professional shoot करवाओ. एक बार जरूरी है. हमने कहा कि भाई अच्छे फोन से आप भी ले सकते हो, बट क्यों सर प्रोफेशनल फोटोग्राफ कई लोग हमने देखा है, दे गो सो आउट ऑफ द बॉक्स, इतनी एडिटिंग, इतना सब कुछ. वो that the homestay owner has to control that. See, you can't give a room on earth and promise the moon, na? That's wrong. Correct. So वही that's where I said honesty. वही Honesty is very important. So that is what very important. I recognize honesty in your photographs. और एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही जो हम भी रेगुलर कहते रहते हैं, bring life to your photographs. हम लोग रूम अच्छा दिखा रहे हैं, बाथरूम दिखा रहे हैं, इतना प्यारा लॉन दिखा रहे हैं, बट लोगों को बॉनफायर करते हुए नहीं दिखा रहे हैं. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बट कोई आता नहीं है यहाँ पे. That's what the message will go if you're not showing people. Correct. So what do you advise the prospective host जो है या अभी नए होम स्टे सेटअप कर रहे हैं या ऑलरेडी रन कर रहे हैं, फोटोग्राफी में क्या एलिमेंट्स लेके आए? See, elements of people enjoying. Whether it is food, whether it is their me time, leisure time, family time. But when someone sees the photo, उसको ये लगना चाहिए कि मुझे ये करना है जाके. ये बस एक ये फीलिंग आपको लानी है कि वो फोटो देखकर एक बंदा जो दिल्ली में बैठा है उसको लगे यार मुझे ये करना है जाके. सर एकदम आपने दिल की बात कह दी. हम लोग यही कहते हैं कि भाई फोटो में खाली वो जो बॉनफायर हो रही है ना, वो उस बंदे को रिप्लेस करके अपनी फैमिली को डाल रहा है. एंड ही इज जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट. वो गुड़गांव के किसी ऑफिस में बैठा है, यार ये करना है. बहुत अच्छी बात आपने कही सर. इससे एक और बात निकल के आती है, फोटोज इंपॉर्टेंट है. फिर मेरी लिस्टिंग की आपने बताया, जो लिस्टिंग की क्वालिटी है ऑप्टिमाइज होनी चाहिए.
तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट है हमारा VEB का, विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड बुकेबिलिटी. यू नो द आइडिया इज टू मेक योर लिस्टिंग मोर विजिबल, टू मेक इट मोर एंगेजिंग. ऑफ कोर्स ऑनेस्ट होनी चाहिए. ये दोनों अगर चीज़ें सॉर्टेड हैं तो बुकेबिलिटी गारंटीड है. राइट सर. आपने एक और चीज़ कही कि यार वेबसाइट, आपने कहा सोशल मीडिया. एक कोई सेटअप कर रहा है सर होम स्टे, लेट्स से इन ऋषिकेश में, छोटा सा होम स्टे जैसे आपका है. वेबसाइट इज अ कॉस्ट, सोशल मीडिया अ लिटिल बिट ऑफ कॉस्ट इफ यू आर नॉट डूइंग इट ऑन योर ओन. आर दीज कॉस्ट्स रेलेवेंट, इम्पॉर्टेंट, कि OTAs ये काम कर सकते हैं आपके लिए? See, eventually, if you want to run that business for long, राइट. okay, you have to create your own visibility, your own identity. और आपकी आइडेंटिटी आपकी वेबसाइट से अच्छी कहीं नहीं बन सकती. ओके. Because also understand, someone who is sitting in a metro city and looking at your property, whether you have a website or not, creates that एक idea in their mind कि whether this is a serious business or just Okay. running. I understand what you're saying. वो important तो है. Right. वो and eventually see, आपका होम स्टे आप आज एक चला रहे हो, कल आप 2 या 5 चलाओगे, उसमें वैल्यू सारी आपके ब्रांड की है. बाकी आपका जो एसेट है वो है, ठीक है, वो तो रहेगा ही whether you are running it or not. वो एसेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. What is changing and what is increasing is your brand's value. Okay. Okay. So in Sweven, if till today I have hosted more than 50,000 people under this brand. Right. Those 50,000 people know about this brand. Right. And brand has a value. That brand needs to have a face and the website is the face. Very nice, sir. It can't be social media also. It can't be social. Because Instagram कल उठा के आपके अकाउंट को डिलीट कर सकता है. No questions asked. ओनरशिप जहाँ पे आपकी है. ओनरशिप आपकी होनी चाहिए ना. डोमेन आपके हाथ में होना चाहिए. कंटेंट आपके हाथ में होना चाहिए. Very true, sir. So website is important. Is important, especially when you're looking at it as a long-term serious business. Right. Side hustle कर रहे हो, you can do without it. But if it's your mainstay business, then होना चाहिए. Beautiful, sir. Influencer marketing, sir. Because nowadays influencer marketing is become very very important, high stake, काफ़ी पैसे भी देने पड़ते हैं सर. तो ट्रैवल इंडस्ट्री में सर पर से स्टेज, होटल्स, होम स्टेज, how important is this influencer marketing? So what I'm going to say might be a little controversial. But when you're choosing a person for a collaboration, and I have fundamentally till now only believed in barter collaborations. I think they work beautifully for both the influencer who wants to travel and experience a new place, and for your property which can be showcased. Be very very clear in terms of who you are choosing. Okay. There are travel influencers, there are food influencers, there are photography influencers, then there are lifestyle influencers. Right. Now a lifestyle influencer is someone who does everything. Okay. Personal experience does not bring any value to me. Okay. Okay. Because everything is being done. And 95 out of 100 are those. Okay. Lifestyle influencers. And they write it very clearly. Okay. Travel influencers bring a lot of value. Lot of value. Okay. No doubt. Photography influencers can be used when you want to do a professional shoot without spending. You can do a barter collab, give them stay and take pictures. That also works very well. I think वो clarity होना बहुत ज़रूरी है, because when people will reach out to you, okay, most of them will be reaching out to you who may not align with what you are doing. Okay, but generally the thought process is कि यार चलो थोड़ी सी visibility आएगी, but वो visibility आपको help नहीं करेगी. Okay. Okay. So you should be very clear कि आप किस तरह के guests को host करना चाहते हैं, and the people that you're collaborating with should be that kind of guest. If you are a place which is for slow travel, okay, like this place we keep for yoga and for slow travel. Right. So I would want to host people who are aligned with that. Correct. Right. Okay. There will be people who are about showcasing great places where a lot of people go. That may not align very well with this place, and which is okay. They are looking for something else. Even if they come here, they may not enjoy it also. They may not enjoy it. Yes, Right. very true. तो वो alignment देखनी और अपने आप को बहुत क्लियर रखना कि मैं उसी alignment के हिसाब से ही collaborations कर रहा हाँ, हूँ. मतलब बहुत you have to important. sync and resonate. Yes. Right.
वो जनरली नहीं होता है, वो इंडस्ट्री में होता नहीं है. पीपल विल जस्ट डू इट विद एनीवन एंड एवरीवन, Right. which is wrong for both parties eventually. बिकॉज एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, जब आके मिल कुछ और रहा है, तो So probably I that would gap- rather, if someone reaches out to me and if I understand that they may not like this place, I will suggest them some other place. Okay. Okay, that will work better for you. This place will not work for How do you sense that? you. You see the profile. You will understand what kind of travel they do. Right. And you're happy to share them with somebody else. Yeah. So now coming to again, because we understand hosting story from this side. You know, there's another hosting going from on the other side where people are sitting with laptops and computers. Technology, basically, I'm talking about. So coming back to that, because that is very relevant. Sir, there is AI, there is algorithm, there are pricing strategies, there are review management, review velocity, and so many fancy words. Sir, ये है क्या? और ये क्या influence करते हैं आपकी booking या आपका revenue? For sure. They do influence as a host what you get in terms of the business. Okay. वो सारा समझना important है is still a question mark, because see, the industry and all industries which are related to artificial intelligence are changing so fast. Things are moving so fast Right. that आप आज कुछ समझ के उसमें इन्वेस्ट कर दो, वो 2 हफ्ते बाद irrelevant हो जाएगा. Correct. Okay. So I think right now though it's more about wait and watch. Keep understanding the technologies if you can and see how you can use it. Like अपने posters बनाने के लिए, content create करने के लिए, blogging के लिए, you can still use it. Right. Okay. If you don't have time, if you have time, I would still suggest do it yourself. You'll learn more about your business. But अगर आपके पास time नहीं है, तो you can use AI for this. Pricing is something which is happening more on the tech side of business. Right. Okay, tech companies are working on the pricing part. And I think it will, in the foreseeable future, stay on that side only. Right. Okay. At a host level, आप AI को यूज करके अपनी प्राइसिंग चेंज कर रहे हो. अगर आपके पास 1000 keys हैं तो yes, makes sense. If you're running a homestay with 4 keys, जरूरत ही नहीं. Then how do I decide my pricing? My pricing which sells? ये प्राइसिंग इज समथिंग विच सी, वो ट्रायल एंड एरर से ही होता है और वो आपके नेबरहुड से होता है. Okay. योर लोकेशन मैटर्स द मोस्ट, वेयर यू आर सिचुएटेड, व्हाट आर द प्राइसिंग एट विच अदर प्रॉपर्टीज इन योर एरिया आर सेलिंग, then you compare yourself to those property, where do you stand, you are in the top rung or the middle rung or the bottom rung in terms of quality, and then you decide. So यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग एक व्यू पॉइंट डालूंगा, क्योंकि वी हैव कंसल्टेड मोर देन 300 होमस्टेज नाउ. तो वहाँ पे ना एक एस्पिरेशनल प्राइस है, हमने एक वर्ड कॉइन किया है. सी, एवरी होस्ट इज इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, एफर्ट एंड पैशन इन देयर प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू देम, बिकॉज होम स्टेज चलते हैं या एक छोटी प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो. तो उनका जो एस्पिरेशनल प्राइस है ऑलवेज ज़्यादा होता है, बिकॉज वो प्राइसिंग में अपना पैशन, अपना एफर्ट्स, बहुत कुछ लगा रहे हैं. बट वो हो गया एस्पिरेशनल. सर, एक प्राइस आता है जो एक्चुअली गेस्ट पे करता है, इसमें एक गैप होता है. सर, वो गैप आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे मैं क्लियर हो जाऊं कि नहीं भाई. सो वो जो उसमें कैसी, व्हेन यू आर कंसल्टिंग होस्ट, राइट, aspirational price is something that you can charge when your property becomes a cult. ब्यूटिफुल. राइट. वो कल्ट बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को होस्ट करना पड़ेगा मार्केट प्राइस पे. ओके. जिस दिन आपको समझ आ जाए कि मेरे पास 4 रूम्स हैं बट मेरे पास रोज क्वेरी 10 रूम्स के लिए आ रही है, आप चले जाओ अपने एस्पिरेशनल प्राइस पे. ब्यूटिफुल सर. ये डिमांड और सप्लाई का गेम है ना सारा. ये जर्नी है कैसी सर? आज ये मैं स्टार्ट जर्नी, देयर इज नो फिक्स्ड टाइमलाइन फॉर दिस. इट कैन बी 6 months, इट कैन बी 10 years also, इट मे नेवर हैपन also. इट इज पॉसिबल कि your property is not capable of becoming a cult. How do I make it capable? पैशन लगता है, सबसे ज़्यादा अपना पैशन लगता है. See, for most of the people who are running the business, the first trigger is to earn money. Right. For a lot of people who are running their properties, the passion is to host people, to meet new people. वो जहाँ पे दिखेगा वो कल्ट बन जाएंगे. ब्यूटीफुल सर. आई थिंक दिस आई कैन रिलेट. अभी लास्ट हमारी एक कंसल्टेंसी कॉल हुई थी, गुड़गांव के एक
कपल्स है, दे वांटेड टू शिफ्ट टू क्लोज टू नैनीताल, एक उन्होंने प्लॉट लिया है, तो अगेन वेल टू डू फैमिली, हस्बैंड वाइफ ओनली, नो किड्स, सो दे वर जस्ट कंटेम्पलेटिंग कि मूव होए ना होए, बट डीप इनसाइड 1 घंटे में समझ आ गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। इनिबिशन था कि पैसे कमा सकेंगे कि नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, कोई कंसल्टेंट आपसे कंसल्ट करता है, चलो हमने तो जो एडवाइस दी, आप क्या एडवाइस करोगे? वेल टू डू फैमिली, दे हैव अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड, दे आर मोर और लेस फाइनेंशियली वेल टू डू नाउ, But you still have to keep at least 5 years before you can reach that space जो मैं बोल रहा था कि आप एक कल्ट बन गए हो। 5 साल तो मिनिमम लगेंगे। आपका कहने का मतलब है कि 5 साल के फाइनेंशियल्स सिक्योर होने चाहिए। यस, राइट, बहुत जरूरी है। आई थिंक हमने क्लोज टू यही एडवाइस दी, हमने कहा भाई पैसे के लिए नहीं आओ, अपना पैशन पूरे करने के लिए आओ। So for myself, I bought a piece of land near Nainital, 20 kilometers from Nainital. Okay. The vision is very clear what I want to do there. Yeah, But what is that vision, sir? What is that vision? For me, the vision is more of like that will be a place for myself. So I'm not keeping it as a place to earn money. So इसीलिए the vision is not of today. It is after a few years when I would want to go and settle down and slow down there. कहाँ है वो जगह सर? It's near a hamlet called Pangot, 4 kilometers from Pangot. Right. It is practically almost the top of that whole range. Beautiful, beautiful. So, will you host people there? No. That You'll will be host for yourself. For me, the long-term plan of me hosting will be near the ocean. Beach. So it will be a place where I'll host, where I will roast coffee, and where I will brew coffee. We'll come to coffee, sir. That is one thing we are very much interested in knowing. So वहाँ पर ये तीनों चीजें, Right. all the 3 passions come together. Amalgamate होगा और फिर जो मज़ा आएगा वो अलग ही होगा. So we are waiting for that. Sir, mountains, beaches, tourism, in सबका, somebody likes mountains, somebody likes beaches. Somebody, a newcomer who wants to enter the travel industry business, probably he wants to start hosting. What will be your 3 important advices before you even start? So इसमें 2 चीजें हैं. First, do you have the resources to create something of your own? पहला क्वेश्चन. अगर वो है तो then I would suggest spend 1 year traveling. Okay. Figure out which area you will be comfortable with. Okay. Then wherever you are shortlisting, figure out whether that place needs you to host. And what the is impact, that? the impact of your business. Okay. Okay. कि वहाँ पर होम स्टेज नहीं है और ज़रूरत है इसलिए आप कर रहे हो, या वहाँ बहुत सारे हैं और वो अच्छे चल रहे हैं और वहाँ ज़रूरत नहीं है बट आपको दिख रहा है कि अच्छा बिजनेस है तो आप कर रहे हो. ठीक है. ठीक है. बुराई क्या है सर? बुराई कुछ नहीं, बुराई यही होती है. सी सपोज देयर आर 10 होम स्टेज इन अ प्लेस, ओके, एंड देयर इज सफिशिएंट टूरिज्म फॉर दोज 10, बट ओनली फॉर दोज 10. नाउ अगर 15 खुल जाएंगे, ठीक है, आपकी जो पर होस्ट अर्निंग है वो नीचे जा रही है ना, योर बिजनेस इज गेटिंग डिवाइडेड. ठीक है, बट मार्केट तो है. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट अगर सिर्फ 10 होम स्टेज के लिए है, ओके ओके, ठीक है, डू दैट मार्केट एनालिसिस. राइट, सो डू दैट मार्केट सर. So I'll give you an example, live example. Tapovan. Right. Tapovan में last 1 year में the number of hotels have practically doubled. नहीं है market. Okay. So at a hotel level, the occupancies are going down. Right. Now because the occupancies are going down, there is more desperation for people. The ARRs are also going down. Correct. So it's a double whammy. Your rates are going down, your occupancies are going down. How will you make your business sustainable? Very true. Okay. And the carrying capacity of the town is the same. Right. So जिस दिन वो भर जाता है, the whole city gets blocked. Right. Okay. Right. So ये सारी चीजें as a business people don't think. Okay. Because हमें आदत है सब कुछ सरकार पे डालने की. ये तो सरकार सोचेगी, हम क्यों सोचेंगे? But eventually the government, the society, all of it, we are a part of it. Be part of it. Right. So you have to think about it also. So if you are opening a homestay, but there are already enough homestays in that area,
you are doing a disservice to yourself and to everyone else there. Okay, beautiful. But if you are opening a homestay where there is a need, okay, then do it. But in that also, if it's not your native place, be mindful of the local people, the local traditions, the culture, that you don't do anything which goes against that. Okay. Right. If you are opening something in Uttar Kashi and beyond, Ganga Valley, Right. Bhagirathi Valley, और वहाँ खोल के आपने रात को अगर रेव पार्टीज करी तो नो, नॉट कूल. Right. Right. तो ये सारी चीजें आई थिंक सोचनी जरूरी है कि जो भी आप कर रहे हो, इट कांट बी जस्ट भी हाँ कि कूल है तो मैं कर लेता हूँ. Cool है तो भाई. Instagram पे देखा था मैं भी हाँ. करता हूँ. Right. मार्केट सर्वे सर इससे निकल के आता है. मार्केट सर्वे करना बहुत इम्पोर्टेंट है. कैसे करूँ मैं मार्केट सर्वे? घूमो, तभी तो बोला आप 1 साल घूमो. You will get an idea of what is needed and where it is needed. Correct. Do your research. You will come to know. Because to open a travel business, you should be a traveler first. If you are not a traveler, then you are not in the right profession. You're not in the right profession. Passion जरूरी है. होस्ट करने का जरूरी है, लोगों से, नए लोगों से मिलने का पैशन बहुत जरूरी है. You should be open to talking to 10 new people every day. होस्ट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सर एक होस्टिंग जर्नी में? I mean, someone who's hosting a homestay or a hotel per se, or a small boutique stay, like you have said, near one. Host important है? So your property becomes an extension of the host's personality. See, because I like meeting people, so I have this place. Right. But I like to live a very peaceful life, is why I have this place, not a place somewhere else. So the people who I host here are people who are looking for that peaceful oasis away from the crowds. Right. Okay. So they will align with this because I have opened this here. Now it is very easy if I am not here and someone else is running it. It can become a very good party place. It can become a very nice rave party place because शांति है, कोई बोलने वाला नहीं है कि म्यूजिक कम करो. In fact, I think earlier the person who was running it, the people who were running it, used to host such parties here. Okay. So now the villagers tell me that the way you are running it is so beautiful for them. For them. Because they don't get disturbed now. And that is very important. Yeah. That is So the यहाँ से responsible जब part. यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, बट यहाँ से जब आवाज बाहर जाती है तो मंत्र उच्चारण होते हैं उसमें सुबह सुबह. Great. Okay. Great. So it is very, very important for you to understand whether you can host, whether you like hosting, and also what kind of property you will make, and whether that's something that people like. So from a business perspective, probably this is not what most of the people like. Yeah. Because लोगों को it might not show make और that kind parties of... पसंद है. Correct. But there is a small niche who want something like that, and because I like this, so I will always keep it like this. You like it. You are passionate about it. Probably money is the secondary in this business. No, money has to be very important. Has to be very important. But you have to realize that you can make money with this also. See, we host yoga retreats, wellness retreats here, and there is enough and more. Yeah, to sustain, right? The reason why most of the people will make a place which is loud and parties and music, because सब कोई वो कर रहा है. It is about not about what you want to do. It is more about कि भेड़ चाल है. Very true, actually. Okay. I think I'll rephrase it. Not about what you want to do, but what is going on. Yeah. भेड़ चाल जो आपने कही, बहुत बढ़िया सर आपने. हाँ, तो क्या करना क्या है मुझे फिर सर? आप बस जो आप खुद ऐसी जगह बनाओ जहाँ आप खुद रहना चाहते हैं. बट अगर उससे रेवेन्यू नहीं बन रहा है तो बन जाएगा. You should know how to pitch and you should understand the right people to pitch to. कैसे करूँगा? Again, social media is the best way you can do it because that helps. That's the window for the world into your property. मतलब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ सर तो हर चीज को कद्रदान हर जगह है. आपको बस पहुंचना है. Yes, there's a market for everything. There's a market for everything. But you have to pitch yourself correct and you have to be visible. And you have to be sustaining with your
मैसेजिंग एंड कम्युनिकेशन. Consistent. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है. सपोज लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली. ओके, नाउ दिस इज समथिंग दैट 90% ऑफ पीपल विल नॉट अलाइन विद. Correct. ठीक है. Correct. तो आपके पास 10% लोग हैं. अब वो 10% लोगों तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा. ज्यादा 90 तक पहुंचने के लिए तो कम बोलना पड़ेगा ना. Correct, क्योंकि दे आर एवरीवेयर. Correct. So that is very important. So the right channels. Right channels, right messaging, right communication, and sustained communication is very important. I think actually, and viewers will also relate. इसमें हम जो बात करते हैं ना, एक अच्छा VB एनालिसिस आपकी प्रॉपर्टी का हो, जिसमें आपकी क्लैरिटी रहे, प्रॉपर्टी विजिबल हो, और दूसरा को होस्टिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन परसिस्टेंस. एक ऐसा को होस्ट जो कम्युनिकेशन जानता हो, क्वेरी को कन्वर्जन में बुक कराना जानता हो, और राइट ऑडियंस को केटर करे. जब भी कोई हम काम करते हैं, we are somehow related to that industry. ज्यादातर मैंने देखा. Yeah. हॉस्पिटैलिटी में प्रॉब्ली बड़े होटल्स में आप उसी बैकग्राउंड से आते हो, या आपको टीम मिल जाती है जो मैनेज कर ले. हम जब बात करते हैं छोटे स्टेज की, लाइक योर स्टे, होम स्टेज, बुटीक स्टेज, यहाँ पे प्रॉब्ली हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से बहुत कम लोग होते हैं. एक इंडस्ट्री का मिसमैच. Yeah. क्योंकि कईयों की प्रॉपर्टी, शानदार प्रॉपर्टी पड़ी हुई है नैनीताल में, रहते वो शायद कनाडा है, दिल्ली में है, मुक्तेश्वर में प्रॉपर्टी है, एंड लाइकवाइज गोवा में प्रॉपर्टी है, बट दे वांट टू स्टार्ट अ होम स्टे. तो जब ये वो चाहते हैं ऐसा करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की नॉलेज भी नहीं है, क्या एडवाइस करते हैं उनको आप? So there are two things in this. First is कि it can be a very good asset also. कि you don't have you are not trained for hospitality. Right. Because then you can be very personal in your hosting. Actually, Okay. yes. Like जो हमारा है अतिथि देवो भव, तो वो कोई ट्रेनिंग लेके तो नहीं मिला था. We naturally host guests. Okay. And I think वो जो naturally जो चीज होती है, that is much better. Okay. Okay. That creates more warmth. See, hospitality में you are trained on how to be warm to people. Okay. But एक होता है trained warmth, एक होती है natural warmth. Correct. Okay. Correct. So that can be a very big asset if you are not trained in it. The idea is, as a host, hospitality में सबसे पहले important चीज क्या है? आपका hygiene, cleanliness and hygiene. Correct. वो Indian households naturally maintain करते हैं, कर सकते हैं, right? सबसे पहले वो है important. Second is your interactions, the warmth of your interactions. ये दो चीजें हैं तो more or less you are sorted. Sorted. यही चाहिए. Right. Okay. उसके अलावा obviously you can be trained for a lot of other things which can be beneficial, but I think that is something which can come with experience also. With experience. Okay. यार, if we do this will also be very good for the guests. Probably a good Wi-Fi is very important for them, so let's do that. Right. Okay. ये सब चीजें आ जाती हैं. Okay. But कोई चीज naturally करना, that love to meet new people and host people, वो अगर आपके अंदर है, that's enough. Probably that creates the USP Yes. and freshness Yes. to your listing, Yeah. your property. Very beautiful put, sir. इसमें आई थिंक थर्ड चीज भी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी को समझना. आपने वो तो है ही. आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि यार कितना सीखूंगा मैं, बट फिर भी सर 3 इम्पोर्टेंट चीजें एज अ होस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुझे पता हो, या एटलीस्ट मुझे आइडिया हो, ताकि मैं उनसे दोस्ती कर लूं और एल्गोरिथम को, एआई को समझ लूं. आप क्या बताएंगे 3 इम्पोर्टेंट चीजें जो मुझे समझनी है? फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव, पहला तो यही है कि योर विजिबिलिटी, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या सोशल मीडिया हो, वो होना बहुत जरूरी है. सेकंड, अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइसिंग. ओके. वो भी एक टेक का ही पर्सपेक्टिव में मानूंगा, बिकॉज यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट अदर प्रॉपर्टीज. ओके. सो यू शुड अंडरस्टैंड की मार्केट में व्हाट इज हैपनिंग, हाउ डज वीकडे एंड वीकेंड प्राइसेस वर्क, हाउ डज सर्ज प्राइसिंग वर्क. कि स्मार्ट बनारस में आपको पता है देव दीपावली पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बहुत डिमांड होगी. करेक्ट. ठीक है. तो अगर आप नॉर्मल ही प्राइस कर रहे हो तो यू आर लूजिंग आउट ऑन रेवेन्यू, नॉट लीवरेजिंग. यस. वो एक बहुत जरूरी है. तीसरा, द एबिलिटी टू वर्क विद ओटीएस. ओके. चाहे वो एयरबीएनबी हो, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो हो,
booking.com हो, कि एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट आप लिस्टिंग कर पाए. उसके बाद all these companies will have someone or the other, either it is the community or their business development guys who are there to help you. Okay. But एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि आप एटलीस्ट लिस्टिंग स्टार्ट तो कर पाओ. और आपने जैसे बताया एक्सेप्टेंस, वो बहुत जरूरी है. ये जरूरी है करना. ब्यूटीफुल पॉइंट सर. अब इन सबको करने के लिए यू नो कि एक ईमेल आईडी तो इज द बेसिक जिससे आप वो करो. चाहिए. तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे अपना एक ईमेल आईडी बना लीजिए, सो दैट इवन इफ इट इज ऑन जीमेल, ओके, सो दैट यू कैन गो अहेड एंड लिस्ट. राइट. उसके बिना तो आप लिस्ट ही नहीं कर पाओगे. राइट. Having a separate number for your property which is different from your personal number is very important. Yes, very important. This is a mistake I made when I started, that I use my same number. I think everybody does that. Right. But over time you realize कि नहीं, I don't want calls in the night. I don't want my personal number to be there out in the world. Very true. तो ये basic चीजें हैं which are very important, and then you learn as you go. जैसे हम कहते हैं सर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी माइट बी योर MBA in hospitality, and then you proceed, scale. Very nice. So you've taken this property on rent, right? So rental arbitrage is what we are talking. A lot of people have this understanding, दिल्ली से, गुड़गांव से है, गोवा में रेंट पे लेके चलाता हूँ मैं प्रॉपर्टी, या ऋषिकेश में, देहरादून में, ऐसी बहुत सी जगहों पे. कितना feasible है ये रेंटल आर्बिट्राज मॉडल सर? So for this, first we have to understand where the market is going and how the market has panned out in the last few years. In India, in the last 2 to 3 years, rentals have become illogical. Actually. Okay. They have gone to levels jahan pe it is now not sustainable to run businesses. Okay. So as a homestay host or a person who wants to start, if you have your own property, आंख बंद करके आप स्टार्ट कर सकते हो. रेंट पे लेके करना है, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च एंड वर्क. ओके, बिकॉज इफ यू आर पेइंग more than 50% of your revenue as a rental, you will not make money because there are other costs also. What's that magic value, sir? कितना होना चाहिए revenue? Ideally, it should be not more than 20 to 30% of your revenue. Expected revenue or revenue? Whatever. Expected revenue. Right. Okay. So 20 to 30% is a magical figure. Yeah. उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. और आज की डेट में it is around 50 or plus. Okay. And that is why most of the hospitality businesses, small businesses, don't make money. Because of the rental. Because of the rentals. What about OPEX, sir? How much should be the percentage optimum? If 30% is your rental, right, around 40% would be your OPEX, which is your utility costs, manpower costs, consumables, groceries, all of this combined. Okay. Housekeeping, right, all of this combined. Salaries internet, and all, everything. Right. Because you should have to keep 20 to 30% margin for yourself. Okay. For a very simple reason. There will be off days and off months in hospitality. Correct. Right. So on average, if you're making good 20% of savings, that's a decent business? That's a good business. That's a good business. Yeah. So, and sir, the research says, because Airbnb की एक research कहती है कि Indians are doing homestays or boutique stays, taking it as a business model, taking it as a, as a project where we want to make real money out of it, not a passive income. But बाहर बाकी यूरोपियन डेवलप कंट्रीज में इट्स मोर अबाउट पैशन, साइड हसल, पैशन प्रोजेक्ट है. तो वहां ये कैलकुलेशन बहुत क्लियर हो जाती है सर. एज यू सेड 30% हमने रेंटल दिया, 40% के पास हमारा ऑपेक्स है, तो एक 30% के हम एक्सपेक्टेड सेविंग प्लस माइनस 5%, 20 to 25-30% इज व्हाट वी सेव फॉर रेनी डेज. अगर यही चीज अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है, सो वी सेव दिस 30, राइट? देन इट्स बेटर ऑफ. राइट. Then also to make it sustainable you have to work, because वो 40% कॉस्ट तो है ही ना. Yes. Right. OPEX कॉस्ट तो रहेगी. तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना बिजनेस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता है. Right. You still need to make an effort to get guests into your property. Correct. But it becomes easier to reach that profitability mark. Right. Okay. But काम तो है. काम तो करना ही पड़ेगा. बिना काम के तो कुछ नहीं होता. Is running a space like Nirvan or a boutique stay or a homestay passive
working or an active working? So for me now it has become a passive working because Okay. I've set up a team, but it took 5 years to do that. Okay. Initially for the first 3 years I was involved on a daily basis Right. in my business. Right. Okay. So you did your MBA. And then you created systems, Yes. right? Yeah. तो वो initially तो time देना ही पड़ेगा. Hmm. And if you're running a boutique stay, Hmm. then you always have to be available because that stay is an extension of you. People are Okay. coming for you. Okay. A lot of these what we spoke about कि cult बना लिया है. Hmm. Cult आपकी personality पे बना है. Okay. Okay. People are coming to meet you also Beautiful. to be a part of your world. Right. So you have to be there. And for a lot of people it works because they want to live in the mountains or they want to live a life which is away from the hustle. Mhm. And along with that, if they're able to make money by hosting people, that's great. That's great. Yep. Compared to long-term rentals, setting up an Airbnb, हम सर एक मैजिकल फिगर कितना टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? लेट्स से वी वर क्रिएटिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी बाय लॉन्ग टर्म रेंटल्स. मेरे पास 2 BHK का फ्लैट है, हाँ. किराए पे चढ़ाया, एक्स अमाउंट मिलता है. मैं होम स्टे उसको चला के कितना अमाउंट कमा सकता हूँ सर? First it depends on the demand in your area, right? सबसे पहले तो ये वही स्टडी करना पड़ेगा because सब कुछ it boils down to a game of supply versus demand. Okay. If the supply in your area is very high and the demand is low, so then you will probably make equivalent to your rental or sometimes lower also because risk ज़्यादा है. But if your demand is more, you can make 2-3x also very easily. Okay. Okay. The way a lot of people do that is if they have multiple units. Okay. What they will do is they will put half of them on long-term rentals, half of them on Airbnbs. So long-term is your fixed income. Airbnb is your additional profitable income. So it's like mutual fund and equity, right? Yes. Or FDs and mutual funds, we Yes. can call it. Yeah. So a lot of people now want that fire, आजकल वो fire बड़ा trending है. You have to make your retirement planning, financial freedom चाहिए. तो उसमें सब portfolio बना रहे हैं हम लोग. क्या Airbnb से हम एक portfolio बना सकते हैं wealth management का? I will ask a counter question on Yeah. this. If everyone starts making a homestay, Right. who will be the guest? Correct. Okay. That is my answer. It ठीक is, ठीक है. I get this question a lot of times Right. from our guests also. Ki Yeah. We also want a place like this where we want to host. Right. And I tell them, if you want a place like this for yourself where you want to go and spend time, great. If you want to host, be very mindful, it's not an easy thing to do. Okay. See, the thing is that everyone cannot become a host. Right now, what the fire that you are talking about, everyone wants fire. Everyone wants to retire at 40 or 35. कि I will have a passive income. Right. But अगर सब लोगों की वही passive income होगी, तो income दे कौन रहा है? Who is coming and staying with you if all of us have our own homestays where we are going and like when I want to detox, I come to Nirvan. Right. I don't go and pay anyone else, right? So somebody living in Delhi or Gurgaon also wants a Nirvan. Yeah, but all of them want a Nirvan now. How do you stop them? And that is why you see, why do you think the rentals are going out of hand? Why do you think the prices of land in mountains are going out of hand? It is because of this. Because people are taking this step without spending time in the mountains, without realizing the ground realities, and 90% of them don't make any money. Actually, They very will true, sir. spend, Very true. they will block it. Their money gets blocked into it. They've created an asset, right? But you're not earning from it. The only earning that you can expect is when the value of your land is going up, which is going up, but it is like a bubble which is just exploding, getting bigger. Waiting to explode. We don't know. We don't know See, when. in India, the good thing is that the real estate bubbles never explode. They'll only always keep growing Probably bigger. they'll sustain for a moment. Yeah. Time correction हो जाएगा. हाँ. But money correction बहुत कम होता है. हाँ. But अगर आप उससे चाहते हो monthly income हो, वो नहीं हो रही है for most of the people. See, all these people who have bought their villas and flats in Kasoli and all the mountain areas, how many of them are on Airbnb? Right. A lot of them. Right. How many of them are actually getting bookings? Correct. Barely anything. Correct. Right. डाल तो सबने दिया Airbnb पे, डालना तो बहुत आसान है. But leverage नहीं कर पा. Leverage नहीं कर पा रहे हैं और वो नहीं हो सकता because डिमांड एंड सप्लाई की मैपिंग ही नहीं है.
Very true. Your demand is X, your supply is 10x. हाँ, और आप सर जैसे आप बताया, आप यू आर नॉट गिविंग इट प्रॉपर टाइम, आप उसको बिजनेस की तरह नहीं You चला are रहे हैं. not giving it the effort it needs to The love it needs. curate it into an exclusive state, Yes. into an experience. Correct. It is like वो cookie cutter model है ना, Correct. 10 बना दिए एक जैसे और बेच Correct, दिए, और correct. you are expecting कि अपने आप magically Correct. they'll start giving revenue. नहीं होगा. That's not how it works. नहीं होगा. आपको उसमें पैशन, टाइम, एफर्ट, प्यार देना पड़ेगा सर प्रॉपर्टी को, तब वो शायद आपको लव बैक करेगी. वेरी ट्रू सर. सर आपने बताया you worked hard, 3 years you worked, you created systems, you created SOPs, you created team. टीम सस्टेन करना, टीम को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. Eventually you can also say you have to get lucky. See, so I'll give you an example. The hostel that I was running, there was a period in between 1 year when we went through, I think, 6 or 7 chefs. And the way it works in the industry is that when the chef goes, he takes the team along. It takes the kitchen team along. Yes, right? yes. And I didn't have an answer. Apart from trying new and newer people, slowly I started understanding some personality traits, what kind of person I want, what is the background that I want, what is the place where he comes from that I want. And eventually the person that we settled down on, now he has been there for the last 3.5 years, single-handedly running the whole kitchen. Even when his team has left in between, he has created a new team. Okay. So I don't have to get into that headache. He does that. But he has been there as a rock. So even when I've now leased it to someone else to run, right, the same team sustains. Okay. So this even is the front desk team, right, they've been with me for the last 3 years now. Okay. And the same team is now running the place. So you went through your ups and downs, and finally you found a resonance. हाँ, वो time लगता है. See, the thing is that in India, the speed with which the number of hospitality units is growing, उस speed से HMs नहीं create हो रहे. Okay. HM graduates नहीं निकल रहे हैं. ठीक है. Okay. And जो HM graduates निकलते भी हैं, their expectations are to work in a bigger property, which is absolutely fair. They are trying to create their own career, right? So for smaller properties to get trained hospitality graduates is not an easy thing. So the better thing is that you get people who are like a plain slate and you train them according to your SOPs. हर बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हर बार वक्त देना पड़ेगा. But slowly you will realize the kind of people that you want who can stick around with you for the long term. कोई हैक्स है सर? हैक्स कुछ नहीं है इसमें. मेहनत है बहुत सारी. तो हैक नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता इसमें. वक्त तो लगता है. वक्त लगेगा. चलो, ऑन दैट नोट सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सब लोग वेट कर रहे हैं आपका. यू worked in Dulux, you worked with MMT, you worked in Ladakh, you set up Himalayan farm stays there. Of course, we were part of the team helping you set up that. Then you ventured into hostels. You have Nirvan. फिर कॉफी आई सर. ये कैसे आ गई सर? Coffee was always there in the background. Okay, I remember that. Sir. Even in Ladakh it was there. Even in Ladakh it was there. Very true. हम जब लद्दाख में थे, मेरा भी कॉफी का शौक है, और आपने मुझे सिनेमन कॉफी फ्लेवर कराई थी, टेस्ट कराई थी, और मैं अब फैन हो गया हूँ. रेगुलर आज भी मैं डालता हूँ. तो कॉफी तो थी सर. बिजनेस कैसे बना? बिजनेस बना ये, आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग टू वियतनाम इन 2022. वियतनाम एंड कॉफी. इट वाज अ बैकपैकिंग ट्रिप. ठीक है. कोई ऐसा कॉफी का प्लान नहीं था, बट व्हेन आई वेंट देयर एंड आई वाज इम्प्रेस्ड विद हाउ दे पोर्ट्रे देयर कॉफी. Like at a national level, there's a lot of pride in the coffee that they sell. So initial trigger वहाँ से हुआ, and then I extended my trip. I went deeper into their coffee places where they were growing coffee. Went to towns जहाँ पे पूरे town में किसी को English बोलने नहीं आती थी. So I was using a Google Translate and an interpreter there to speak to people. Right. वहाँ से the idea came that I can do something professionally in coffee. And the initial plan was that I'll import Vietnamese coffee to India and sell it, because as a concept it looked very nice, the way they serve coffee. Then I came back to India, learnt about the business, learnt about the
custom duties on importing coffees and all. Correct. And then I realized it is better to get into Indian coffee. Right. But वो एक बार trigger हो चुका था. So then I started visiting farms, meeting farmers, tasting different kind of coffees. And then I think 6 months after the Vietnam trip, I launched my brand. Oh, great. And that was which year, sir? 23, mid of 23. Okay. So it's been more than 2 years now. And so we only do specialty coffee. We go and find the best of Indian coffees from farmers directly, roast it ourselves, and it's primarily a B2B business. We supply to cafes and 5 stars and specialty coffee shops. And recently we've launched a B2C also, directly to consumer, because India mein the home brewing is growing very fast. Correct. And it is going to explode in the next 5 years. So that's the place to be. But as of today, B2B is huge in India. So that's where we are. And now the cafes are realizing that people are asking for better coffees. So cafes are shifting from commercial coffees to specialty coffees. So that's where we come in. Commercial coffee, specialty coffee. Difference क्या है? Difference. So when a farmer grows coffee, okay, suppose he has grown 100 kgs. उसमें से जो top 10 या 20% है, जो filter out करी जाती है, looking at the beans, then they are processed separately in a special manner. They are sold as single state coffees. Okay. Clean cups होते हैं, कोई डिफेक्ट्स नहीं होते. कॉफी में डिफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, इंसेक्ट बाइट्स एंड एलिफेंट्स एंड ब्लैक्स एंड ऑल दैट, वो सब हटा दिया जाता है. तो वो जो टॉप 10-20% होती है कॉफी, दैट इज स्पेशलिटी. वी टॉक अबाउट द बीन्स, राइट? बीन्स, या, ओके. उसके बाद देन यू कम टू द मिडल पार्ट, व्हिच इज योर कमर्शियल कॉफी. ओके. सो द वे दैट इज टेकन केयर ऑफ इज दैट सम कमर्शियल ट्रेडर विल कम, टेक योर कॉफी 50-60%, जो 20 के नीचे वाली है. He'll take it from 100 farmers and he'll mix all of it together, and that is roasted commercially. Right. अब उसमें कोई भी origin notes नहीं रह जाते हैं क्योंकि सारे farmers की mix कर दिया आपने. Okay. Commercially roast होती है, darker side पे roast होती है. So that's the commercial grade. The bottom 20% is what goes into probably instant coffees. Okay. Okay. Instant coffees are also done using specialty. In fact, we have started working on some of it. Right. But most of the instant that you will see in the market, commercially available, वो bottom grade coffee से ही बनाई जाती है. Okay. So, sir, with the sweet taste of coffee, we would like to end this session. We'll brew again. We'll brew again now. तो sir, बहुत कुछ brew हुआ है यहाँ पे. We talked about the travel industry. We talked about the tech in travel industry. We learned कि भैया ट्रेनिंग कितनी important है. और आप अगर पैशनेट नहीं हो तो शायद पैशन ढूंढो, फिर काम करो, जैसे आपने बताया. फिर आपने ये सारा ब्रू किया एक शानदार कॉफी के कप में. वो हम अभी जाके पियेंगे. और हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे होंगे, उन्होंने भी अपना बढ़िया एक कप बना लिया होगा. दे माइट हैव कम टू लॉट ऑफ कंक्लूजन्स, और प्रोबेबली दे माइट हैव फिगर्ड समथिंग आउट जो उनको इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिनसे वो कुछ सीख पाए होंगे आपकी जर्नी से. And of course, it is always a pleasure talking to you, Manish. Good to have you back here. Yes, good to meet again in the mountains. काफी लंबा पेंडिंग था हमारा. हाँ, बहुत दिनों से चल रहा था. और सब बस यही फर्क है कि माउंटेन्स पे तो हम हैं, वो शायद लद्दाख के पहाड़ थे, ये कुछ ग्रीन पहाड़ है. ग्रीन पहाड़. आपको याद होगा हम लोग ग्रीनरी का कितनी बातें करते थे. I remember the trip that we made from Ladakh to Manali and Mandi. Oh yeah, beautiful. And I remember Setan and a few other boys, those who were coming out of Ladakh for the first time. For the first time. They asked me कि ये देवदार के जंगल किसने प्लांट किए? बहुत अच्छे से प्लांट किए हैं. And I said ये तो नेचर ने करे हैं. So they, for them it was very difficult to understand कि यार ये सब इतनी ग्रीनरी अपने आप कैसे होती है. And this was right when we moved from Lahore above Rohtang down into the valley, and they were flabbergasted कि wow, how this is happening. Exactly the way we were. जब हमने लद्दाख के पहाड़ देखा था कि ऐसे कैसे. तो on that note, sir, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई. Katkuni, our project. Yes, I remember. The name was picked in Ladakh. Yes, and it was, I think we saw Katkuni for the first time as an architectural style on that trip. On that trip. Yes. Yeah, beautiful. निराले गए थे. Yes. फिर काटकुनी कोठी में गए थे. Koti Kais is where we stayed. Yes. Beautiful property. Yes. So on that note, thank you, Manish. Thank you for
taking time out. Thank you for